the session or discuss the strategy and roadmap. I also want to tell you one thing. And I also want to tell you that we introduce the one another person that is also working in the TCS. So Siddharth with us today, and he is also working in TCS, and he will also share his experience and preparation journey on the strategy and roadmap with you. I'm sure his experience will be helpful for you. Okay, so Yeah, Siddharth, yeah, thanks, Ritesh. Yeah, so good evening, everyone. So, yeah, I'm there. So, I have been, let me introduce myself. So, like, I have passed out in the year 2024 from REC Business, and I have been working in TCS for last 1 year. So, yeah, that's all about me. so okay, Siddharth, I continue with the session. So before discussing the strategy and roadmap of TCS NQT, let me explain the exam pattern of the TCS NQT before starting the strategy and roadmap. Yeah, so just one question I have is like how many of you are like in like pass outs or are going to pass out this year? Like are you from 25 batch or 26 batch? Okay, okay. So I can see like 25, 26. Okay. Okay. So like anyone has like I think anyone has ever attempted for NQT or have given the paper in the past years? Oh, yeah, yeah. Can see which okay. So like anyone may have given the March one, right? The uh, recently this year, the TCS has like conducted an NQT exam in 2026 March. Okay, okay, okay. So like Ritesh, you may continue. We will like take up the questions later on. Yeah, continue. So can anyone share your experience of TCS NQT exam if anyone is also giving the TCS NQT? Anyone can share your experience? Okay, no one is interested. I think share their experience. So I'll moving ahead. So before discussing the exam pattern and strategy or roadmap of TCS NQT, so before that we have discussed the TCS NQT exam pattern. So what exactly asking in TCS NQT exam? So the in exam mainly divided into two parts. First thing is a fundamental and next thing is a advanced section. So in the fundamental section include the verbal ability, reasoning, and the numerical ability. And the advanced section mainly include the advanced aptitude of reasoning and coding part. So one thing I want to ask all of you, which section do you want to find the most difficult, like aptitude, reasoning, or verbal or coding? If anyone is appear in TCS and QT exam, so what section you
Okay. Hello. Anyone? Anyone else? Hello, bro. Nitish. Yes, yes. Yes, Karthik. So, in our college, last last month we conducted a thesis exam for on campus. Yes. But I know I will written exam, but then something for verbal section we conduct three sections only verbal ability, but changing the topics only three sections. You know, I will tell that section, bro. Hello. Yeah. So you were Yeah, saying, audible. yeah, just a minute. So you are saying like they have changed the sections, right? Yes, yes, for verbal Oh, ability. okay, okay. Actually, like at when we have given NQT, like we have given in the year 2024. So that time the sections were into two parts, like the basic section and the one was the advanced section. So the pattern was like numerical ability, then we have reasoning, and they have verbal, which includes English. And same for that advanced, same pattern was there, but the questions were a bit difficult. So like, and then there were two coding questions. So what like you have given, so what change you have like seen? What change in the pattern you have seen? For that section, only three topics is there. One Okay. topic is sentence corrections, another topic passage recalling, and another topic is email writing. These three sections only conducted for verbal ability for this year. Okay. For on campus, I don't know for off campus, bro. Okay. So this is for verbal. And apart from this, anything else? For same as numerical ability and reasoning ability, same topics is there. But this section only changed for this year for Okay. tell Means for our campus. So, so sir. this was a subjective or MCQ? Like you have to write something or just MCQ? Yes, yes. For email writing is we can written for email like can ask one question. We can write the email. Yeah, see, the thing is like this pattern changes with on and off campus. So Yes, like yes, when we are talking about the NQT, we are like especially focusing on the NQT which is not on campus, which is an off campus and open to all. So so when we have like given for that off campus one. So okay. when this TCS approaches to any college, so their pattern may change. This happens. This I have already seen because in many colleges. Yes, yes. For off campus also is there. TCS NQT is also there for this year. Okay, yeah. Actually, I don't know. This year, is it going on or like is it about to like? For our state is so many colleges came for on campus for TCS. Oh, okay. So like at our time, first on campus was going on, then the pre NQT or what we called like off campus NQT was happening. Yeah. So the thing here is that time the people can give two times on campus as well as off campus. So I'm not sure what about currently what is the thing, Can you but share for PDF for I have one verbal ability PDF is there for can you Mhm. send it? Verbal ability, like you are asking about the questions, PYQs. Not not I send the PDF for topics for this year. Oh, okay, okay. Okay, we'll have to like find something. Okay, I will share. Thank you, bro. Yeah. Sir, is it possible to
uh, 2023 pass out, sir. Yeah, I think the March NQT. Have you given the March NQT? Um, Given sir, not means no reply has come, sir, from the end. I applied, sir, but the entry test application not came, sir. So I filled, I think this year sir. only the 2024 and 2025 and 2026 batch involved in this NQT. That is available in March. I think 2023 is not applicable for this. Sir, icon NQT test, sir. For that, it is pass out is it's there now, sir. Yeah, actually, I'm not very much sure about the year of passing out years, which what were who were eligible. So, like you have Sir, given, so you must have seen, right? uh, can you suggest any reference, sir, like that? Like, see, in TCS for fresher roles, they Okay, don't take any referrals. okay, okay, So, okay. if Thank you, sir. yeah, the thing is that you have the only way to come as a fresher is through NQT. NQT. But Okay. application is not taken, no, sir. It's Yeah, not. like Yeah. maybe you like 23rd batch might not be eligible. I'm not sure Oh, what is the oh, thing. okay, But okay, like, sir. have you got the, have you written, like, have you given the exam? No, no, sir. Only Oh, that application form also I filled, okay, sir. okay. Okay, okay. Yeah, they must have an eligibility criteria for the Oh, passing out test. okay, okay. Thank you, sir. Okay. I think all of you are aware of the TCS NQT exam pattern, right? No, sir, can you give a brief about that, sir, how to apply and that? Okay. I'll provide a detail about Good evening, this. sir. Good evening. Sir, I am asking that do you think we should also apply for TCS Iron as well, Sorry, thesis iron means the paid one, right? the off-campus one? I think that is a paid test. They are asking for some money. Oh, It's okay, okay. asking some So, money like 5,000, 599, like, 699. yeah, Yeah, like, see, yes, like sir. the thing was, it was in our time also. That, but I have not seen anyone getting selected from this ion. So what I would recommend is like, don't, if you want to give a practice session, or if you want to give like a hands-on experience for this exam, you can go ahead, but don't take this as a, like, what you say, like if you give this and you will get selected. So don't like take this as an objective. You can give as a training or a practice purpose. So like my suggestion would be that, because they, what they say is they hire through ion, but the quantity is very less. They may have hired, but it is a bit what I say, it's difficult. So the thing is, the pre NQT they conduct is the main thing, is the main what we say, main exam through which they hire, or they mass hire the people. But for you, if you think like, if you want to give a practice test or something, if you want, like, if you have a hesitation to give exam or what pattern you may observe, so for you it may be a better option if you want to give a practice. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Sir, for 2027 batch, when the TCS will conduct their NQT exam, Sorry, which is there batch? any? Which batch? Sir, You, can you provide more details on that TCS NQT? yeah, yeah. Ritesh, can you like give a brief? Sir,
I am asking for 2027 batch. Who is passing in 2027 batch? When the TCS will conduct their NQT exam for that batch? Like, see, this there is no pattern, but what usually they do is like what I have seen is they like for the off campus they do in the last sem when we will be last sem means next year January or something. And but Okay, for the sir. on campus they might have started for the 27 batch. But it depends on the college also. And sir, if we apply off campus, then we have to pay money for NQT appearing in NQT exam. No, no, no. This exam is totally free. What there is one thing that Richa said, like the ION one, which that is a paid exam, but they don't mass hire through that exam. Okay, sir. And sir, when their application came for registration, Yeah, you will get to know. Like it is like a very public thing. So when the NQT exams are open, most of the people get to know. Like in our times, we used to get like the application has started and this is the last date. So before we have to do. So and at our time we have got a very much good time, like 2 or 3 months to prepare. So see if you can see like they on the YouTube also if you search there are many more teachers which like especially focus on these patterns and they tell what the previous year question were. So maybe you can refer those things. But and at our time we did the same. But the only thing is the through which you can like qualify is to focus mainly on the coding section because the weightage of the coding section what I have seen is a bit more. And if you have a good command on quant, verbal, like you all are math student, right? So you must have a good command. So but thing is you have to do a bit of practice. okay, sir. That's Thank all. you, sir. Yeah. Sir, do they ask same pattern for experienced person as well, Experience as well. How much experience? or 1.5? 1.5 means you are working somewhere. Yeah, Which batch? 22. Okay, okay. So for 22, what I have would say is you will get a lateral entry. Lateral entry means for a specific rule they will have, and they will like ask that questions from that only. Okay, So for experience, the pattern changes, okay. and Thank you. there is a specific openings for the specific rules. Okay, So, like most of the time, you have to visit the TCS website and see what are the rules available. Then you can okay. apply. Yeah. Okay. Sir, this session is specific for TCS NQT, right? Yeah, correct, correct. And QT for the freshers, for the new joiners who want to join as a fresher, Okay, and thank you. for the like experienced person, like the things changes. Okay, okay. Yeah, Thanks. Sir, TCS NQT and TCS IO and NQT both are different. yeah. The NQT means the free one which they conduct. That means for the mass hiring one, the off-campus which we are telling. And ION is the paid one. Okay, sir. Thank you. So, if you are talking about the TCS NQT exam pattern, so I think mostly you are aware of this, but I'll discuss the brief about that. So, so the in NQT exam, mostly they are divided into two parts. First one is the fundamental, and second is the
advanced section that we have already discussed. So in fundamental, that is also divided into three parts. First one is a verbal, second is reasoning, and third one is a numerical. And the in advanced section, that is divided into two parts. First one is advanced aptitude and reasoning, and second one is the coding. So the if we are talking about the weightage of which part is most weightage and which part is less weightage, the coding part is the most weightage in for the NKT exam. So if you are targeting to qualify or clear the NKT exam, so if you attempt the coding question correctly, uh, so there are a lot of chances you have to clear the NQT exam. So in NQT, basically, a two coding has been populated in your screen. First one is a medium, and second one is easy. So that is the brief about the TCS NQT exam. And for another thing, you can follow us on YouTube channel. Most of the people are asking when the form is released for TCS NQT exam. So you can follow our YouTube channel, or you can follow some another things like join a WhatsApp group or another thing. So you can aware of when the TCS NQT form will come in. So that is the things about the TCS NQT exam. And if you're talking about where we are preparing for this, so you can also follow us on YouTube channel. In my time, I have mostly followed one YouTube channel, that his name is Campus Monk. I have followed to prepare for TCS and QT exam, and where we have learned a lot of things like verbal ability, aptitude, and reasoning. And also, we have followed one another YouTube channel for coding, because in TCS and QT exam, they are not asking the most difficult coding question. That is totally depends upon the shift and your luck. But in my time, most of the my colleagues and my friends asking the coding question was is not difficult in TCS and PT exam. So you can first try to solve a basic question of coding, prepare a mostly focused on the linear data structure, because TCS and PT mostly followed the mostly asking about the question related to string, array, and linked list. So you want to take time to improve your DSA skills, or like to try to solve daily one DSA questions. So that is all about the TCS and QT exam pattern. So let's be moving on the question answer session, because you are mostly are preparing for the TCS and QT exam, and you have a lot of question in your mind. So you can ask any question. Yes, you can ask. Sir, is the same exam pattern for the different roles in TCS like software developer, data analyst, and any other? No, no. So in TCS NQT exam is a mainly hire for three roles. First one is a ASC, that is related to Ninja. Second one is a digital, and third one is a prime. So the exam pattern is same for all three roles. So there is no difference between role like Ninja, digital, or prime. So that is only uh, conducted about TCS NQT exam. And after that, if you are qualified for that exam, so uh, after that you will share one mail for which role you are qualified for the interview. That is mentioned on the email. If you are qualified that is digital, if you are qualified the prime, or you qualify for the ninja role, that is totally depend upon the performance of your TCS NQT exam. Okay, sir. And sir, one more question. Yes. Sir, TCS related TCS NQT related exam update is available on TCS Next Step website. Yes,
All details is available on the TCS portal, TCS Next Factor portal, and also a lot of YouTube channels that provide a detail related to a lot of exam like TCS, Wipro, Infosys. So you can follow this. Okay, sir. Thank you. Anyone else? Okay, so like uh, one question I have, like some of you must have given the March NQT, right? I think someone must have raised the hand earlier. So let me tell you, like when we have these exams, so the more the more area, what I will say, you need to focus is on the which coding part, because like at my time, what I have observed is like their compilers, their keyboards, they mostly got stuck, and the people have idea but they can't complete these questions because like this, see what the coding platforms we use, that GFG, like sorry, the yeah, and or the hacker rank or something, they have a advanced compilers and like they detect the errors. But when we do the coding on that TCS one, no, so like there the things change. You will not able to find out what error what I have got, or what mistake I am doing, why test cases are not passing or something. So I would suggest you should first practice, like one thing is the most important thing is to how to take the input, because what I have seen, the people know the question but they can't take the input in, and so the test cases does not run because they are, you can't use uh, what we say, there is no advanced compiler that you will get to know that what mistake you are doing, or what is the error in the code. So what I would say, you should practice on a notepad for TCS NQT especially, because then you will get to know, okay, you will know a better debugging skill. That is most important, because when we got stuck in the exam we get blank, and this easy questions does not we are not able to like come up. So this is one thing. And I think some question is in the chat. Okay, so Sir, Sarthak is, can we practice on VS Code, or it is recommended to do on the notepad? no, the thing is, you should first have a basic command to take input. Like, see, at my time, most of the people know the questions because the question was of just to sort an array, just to sort an array, or just to give a basic ordering like this 0 1 1, what we say, there was a very basic question which in which we have to tell the count of a number. So see, most of you can do, but the thing is, when you get an error, no, so in the VS Code, or the advanced editors we have, you can easily get the line where your code is throwing error. So why I'm suggesting notepad is, yeah, you will get a brief debugging skill, what error you have. So that is the thing, especially for this NQT, because they have their own compiler, their own editor and all. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. So I think Sarthak Saha is asking some question like, what is the best way to prepare for TCS NQT? So Sarthak,
For preparing for TCS NQT, you can follow our YouTube channel where you can prepare for the your fundamental things like a verbal reasoning and aptitude part. And also you can follow our YouTube channel where you are preparing for the basic coding Sir, skills. can you share the Like YouTube link? I think Siddharth can. Okay, I can share it to you. Sir, please share the link. Okay, okay. Like, see, the thing is, we are also like we have given 2 year back, so the pattern must have changes in between. So we are not like aware of the latest pattern, right? So the thing which we are in this session, which we are main focus is to tell some practical things which you might not get on YouTube or something, or which you may face in the exam, but like no one will tell you, right? So we have like actually not aware of the Sir, latest pattern if also. someone is like 2027 pass out batch, he Mhm. can give TCS NQT exam in 2027. Mhm. Yeah, Can you he can. give? Yeah, in 27 you can give. This Okay, okay. NQT is mostly for that pass out, the current year pass outs. So, sir, But like, for uh, for example, if someone is passing out in 2027, so he Mhm. can give the exam in 2026 also, like. No, I don't think so because they what they want is their final year students. Okay, means because no, sir, I've saw that in the LinkedIn and all, like, some of our plays in TCS, like those were in 2027. So I think that is campus hiring based, or like they have given the exam on base like that way. Some, I think I want to ask, like, uh, Okay, so you must have seen like the BTech students you are talking about or some other no, no, BTech, sir. courses. Okay, so yeah, there can be possibility like in that campus hiring, they must have started something called intern or for some kind of Okay, role. okay. But you are saying like that those who are in 2027 pass out, they can give the exam at 2027 only, like TCS at QT, you are saying. Yeah, Like, yeah, yeah. okay, okay. Thank you. Thank you, sir. Okay. And QT is for the pass outs only. Yeah, pass So outs. like we have a time for the preparation and all, like so that we can give because Yeah, I yeah, will be okay. Okay. Thank you, sir. Okay. yeah. To be very frank, you don't need to prepare very much. See, the thing is, they do not disqualify most of the student in NQT. What they do is, what I have seen is, they mostly disqualify in that what we say interview round. What they asked in the interview round, like BSc. Like I think anyone must have given interview. Yeah. Is there anyone? No, Okay, sir. okay. Let me tell you. So at my time, what we have done is I have solved this NQT thing, what we say, numerical and all, advanced sections. I'm not sure how many were correct or not, but what I have done is I have focused on the main coding question and solved both the questions. Okay, so somehow I got uh, all the test cases passed. So the role for which I have given the entry was the prime role, and then when we after 1 month, after 1.5 months of NQT, when we have given the interview, so there they have separated into two panels, what we say panels for Ninja Digital, and one was for Prime. So there they have they will mostly ask based on questions based on your resume. So the first thing they may ask is what project you have made in the final year, or what you have done, what skills, what technical skills, what coding language do you know, can you solve some basic DSA questions. They might give you pen paper and say draw a triangle or star pattern, what we say, that kind of question they may ask, or they can ask to write a code to like find a prime number or something. Like basic question they're asking, like this type of basic thing Yeah, basic on the pen and paper. on the So panel. Okay. that is why I have said you can like.
practice on notepad or something, because if you like pass the NQT, so they may ask in the interview like write in pen and paper. Understood. Yeah, the thing Understood. one thing is that, and mostly questions for will be from your resume, DSA, based on the roles, what role which you have qualified for, Ninja Prime Digital, whatever it is. So they may the level may increase or decrease based on that role. But the main thing is you should have a like at least a basic knowledge of DSA. Is that is must, because Means if someone is practicing till sort, means linked list or like recursion, backtracking. So yeah, like yeah, like uh, see, it recursion, is yeah, sufficient, I think so, sir. Like yeah, yeah, yeah. You know, like see, this is not that much high level, yeah, because yeah. in teachers they don't much ask that much high level. First, because they what they judge is how much understanding you do have, because you are a fresher. They know that you might not have that much of like problem solving skill, but the basic you have a better understanding. That is a Understood. must thing. Understood. Understood. Okay. So Okay. like if you are preparing for advanced, but make sure you have a good basic understanding. That is must. Yeah, And yeah. go for Prime advanced. number, even number swapping, or ASCII values like some little bit patterns, question star pattern and all like that one. Yeah, 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 Yeah. yeah. Uh, That is a very good thing to like have a good hands-on experience. Because see, okay. if you can't solve a basic question, they will simply reject you. Understood. Understood. Like So I will what we will say, don't get like into that advanced section or something. First, have a good command on basics, then you can further proceed on that advanced sections like backtracking and all, or okay. DP or something. What you have. Okay. 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 Yeah. Sir, for TCS NQT exam, which programming languages are important? Like, see, language is just a language, like we speak Hindi or English. So No, sir, language does not. programming language, Yeah, not yeah, yeah. I know the programming language. Language means what? The language which we in which we speak to the computer, right? So the language does not matter. But if you want a language, want me to suggest a language, is to like Java or Python, because in industry what we have seen is mostly the project are based on Java or Python or something. When you get into TCS, mostly interviews will be done for any project role. You have to like must have a good Java knowledge for getting a developer role or something. Like someone is exploring in backend or like learning Python, fast API, Django, and all like so. That will be okay because my basically my domain is like in from the backend developer like. So basically, I'm prefer to do using Fast API and React JS and all like. So it will be okay like for the TCS if someone is applying Yeah, yeah, like yeah, yeah. See, you must have a good knowledge on at least one language, one programming language. okay, See, okay. the logic remains the same, but the language might get changed, right? But like if you want to know which language in the industry they are mostly using, is Java or Python, because Actually, mostly. sir, basically now I have practiced lots of questions in CPP. CPP I have used most of the things Yeah, like correct, correct. programming and all like. But for Hmm. my development role side, now, sir, I'm using Python. Thing is like, so there will be something that make may be difficult for them to shortlisting like this if I happen like if I do the coding in CPP like No, no. The thing here is when you go for interview and you have mentioned like I have this much of knowledge in this uh, particular language, maybe C++ plus plus or Python. Okay, so the panelists, there are actually three or two or three panelists. So anyone must have having like Python knowledge. So he might ask a bit tricky questions in that also. So like what I would suggest, the things which you have a good knowledge, only mention only those things in resume for this NQT. Or okay. you can mention like I have the work on this work framework or something in the Python.
and I have done this coding in this language or something. Okay, sir. And OOPS and DBMS, OS and computer networks like this kind of they are Yeah, must yeah. and must. See, oops is also a good concept because oops they may ask, yeah, but about the DBMS OS, it totally depends on the panelists. What what question in their mind they are having. Okay, sir. Thank you. Okay. Okay, so let's go on the questions which we are having in the chat. Okay. Can a BC exam student give NQT exam? I think for that BCA, wherever we have Ignite role or something. Have you ever checked? Yeah, I think for the BCA role they also had. They hire, but I'm not sure what is the role and for what. Yes, sir. My question is same. I am BCA student, 2026 pass out. I have Mm-hmm. get my domain is data analysis, sir. Mm-hmm. So you are a pass out or you are a final year? Pass out, sir. 26 pass out. Okay. So So I'm not we sure can about the apply for TCS NQT exam. like see, actually for the BCA roles, I'm not sure, but I'm sure like there is one role called Ignite or something, Ignite or Smart. I think which for which role they hire. So for this NQT, I think for see the for this Ninja and this roles, no, they what they Yes, usually sir. prefer is BTech or BCA plus MCA. So MCA is more or less equivalent to BTech. So they give the chance for this what we say Ninja and Prime digital roles, whatever this roles. But for this It BCA, means there is MC is it means sir MC is compulsory or only BC can suitable. no. See, for this role which I'm telling is that Ninja role, or you must have heard, right? Ninja, Digital Prime, they have Yes, this sir. for Smart also. yeah, smart. Yeah, correct. For these three roles which I'm saying, the MCA is mandatory. For I think for the smart, they might prefer BC also. So that is the thing. So will sir I can apply or not for this NQT exam? Like, see, you have to check the eligibility criteria whenever it comes. Have you applied for the March one? No, sir. Like, were you like aware of this exam Sir, in the? in the March of TCS exam, I will in the college project, sir. I think 26 were eligible, right? Yes, sir. 26 pass out was eligible. I, you might have checked. I'm not sure. But for these three roles which I have told you, right? BC is not eligible. For smart, they might be eligible. Yeah, Bravo, you have something to share. What you're saying? Hello? BSc CS, I think also there is different role for different like educations. So BSc CS, I think smart or ignite maybe you can apply. Sir, when in the smart exam for TCS? Actually, I also don't know, but when these like companies release their openings, so mostly you get to know. Like you have to check, like you have to check on internet, is there any hiring or not. What I would suggest, you should follow one YouTube channel at least. Okay, That sir. that. I am okay, sir. I will see on that LinkedIn account the Mhm. TCS ads.
TCS show in the data analysis role for the freshers. Any walk-in drive interview or direct hiring? Sorry, which role? Can you share? Can you share the link? I have to see. Link or link क्या sir? Well, you have said you are saying right the LinkedIn post. Can you show me? Like I'm not aware. Sarthak, Okay sir, you, I you will can send in the check. screenshot in the chat box sir. Okay. Yeah. Okay, wait a minute, 2 minutes sir. Yeah. Anyone else having any doubt or something? Or let me check the chat box. Hello, Yeah. sir. I am audible. Yeah. Correct. You are audible. सर आई वांट टू से सर एक बंदा मतलब मैंने अभी देखा और टीसीएस मतलब अपने टीसीएस बीसीए से था कॉमर्स कॉलेज से वो हम्म। टीसीएस में प्लेस था ग्रेजुएट ट्रेनर सो हाँ फिर करेक्ट। उसने हाँ सर उसने फिर स्विच मार दिया माइक्रोसॉफ्ट में तो मेरे हिसाब से मतलब जो बेसिकली शायद मतलब बीसीए वाले दे सकते हैं एनक्यूटी एग्जाम शायद सी मैं यही बोल रहा हूँ कि 3 रोल्स पे होता है, ठीक है। सो अगर उस एनक्यूटी एग्जाम में इग्नाइट और स्मार्ट के लिए भी है जो तुमने बोला कि ग्रेजुएट ट्रेनी, करेक्ट। सो उस रोल के लिए तुम दे सकते हो, करेक्ट, यू आर करेक्ट। मैं भी वही कह रहा हूँ, बट डिपेंड्स किस रोल के लिए वो पर्टिकुलर हायरिंग है। बट सो एक्चुअली मेरे को बीसीए का उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ हायरिंग होती है, करेक्ट, ये चीज करेक्ट है। बीसीए और एमसीए बीएससी ऑल्सो, बीएससी आईटी ऑल्सो। सर वो या सर फोटो अपलोड नहीं हो रहा है चैट में अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अपलोड नहीं हो रहा है वो वो फोटो टीसीएस अपलोड का। नहीं होगा फोटो नहीं होगा, लिंक अगर है तुम्हारे पास तो शेयर कर सकते हाँ हो। सर मैं लिंक भेज सकता हूँ भेजो कोई दिक्कत नहीं। So the one question I put from the chat box is NQT exam is completely different from the TCS Ignite exam. Yes. TCS Ignite exam is a paid exam and TCS NQT is totally सर free. लिंक का पे डाल टेक्स्ट किया है देखो। हाँ देख। हेलो, या सो ये लिंक तो ये तो एक्सपीरियंस के लिए है। फ्रेशर कहाँ दिख रहा है? डेटा एनालिस्ट देखो यहाँ पे अबाउट द जॉब में सेक्शन में जब जाओगे ना तो यहाँ देखोगे डिजायर्ड एक्सपीरियंस रेंज इज 6 to 8 years। ओके सर सर मैंने नहीं देखा लेकिन वो सर पीसीए के लिए अप्लाई हो सकता है अगर किसी प्रेशर भी कर सकते हैं अगर किसी को नहीं 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो। नहीं देखो, जो रोल जिसमें ईयर मेंशन्ड है ना उसमें तुम फ्रेशर तो नहीं लेगा वो, तुम कुछ भी कर लो वो नहीं लेगा। Sir, TCS Ignite is for BCA and BSc graduate. Yeah, they are for BCA and BSc graduate. They हाँ train basically. Yeah, करेक्ट। it's a particular मतलब ऐसा है कि एक पर्टिकुलर बना रखा है एनक्यूटी से अलग है सर वो थोड़ा मतलब हटके है उससे उसमें क्या बीसी और बीएससी वाले मतलब जो नॉन टेक इसमें बीटेक वालों के अलावा है तो सर एक डाउट था कि सर जैसे इन्फोसिस का अपने एसपी एससी डीएससी ये सब राउंड आता है तो इसमें क्या बीसीए वाले एलिजिबल है क्या मतलब सर एमसीए वाले तो है लेकिन बीसीए का थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है इसमें ये सर मुझे भी नहीं क्योंकि
सभी जगह बीसीए के साथ एमसीए भी कंपलसरी किसी किसी पोजीशन पे है ना। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये सही कह रहे हो। देखो, बीसीए एज इन अगर तुम आ भी जाते हो ना, तो स्टार्टिंग पैकेज काफी मतलब उतना सही नहीं देते जितना मैंने देखा है। सो और मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में एलिजिबल भी नहीं होते, बट हाँ कुछ दो रोल हैं, स्मार्ट एंड इग्नाइट समथिंग, उन पे एलिजिबल हैं। तो अगर तुम चाहो अप्लाई करना तो लाइक यू हैव टू चेक व्हेन दिस ओपनिंग्स आर देयर। सर अभी थी इसकी, मतलब प्रीवियस मंथ ही थी, तो शायद उसमें ग्रेजुएट को ले रहे थे, और अभी मैं मतलब 2027 है मेरा ग्रेजुएट पास आउट, तो अभी मैं होऊंगा, तो अभी मैं उसमें अप्लाई नहीं कर पाया सर, इसलिए। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, नेक्स्ट ईयर भी आएगा वो, हर साल देखो आता है। इस टीसीएस की एक चीज सबसे बढ़िया है कि ये और सब कंपनीज की तरह वो नहीं करती, मोस्टली एवरी ईयर दे हैव, व्हाट आई हैव सीन। मतलब अभी सर इस साल तो आ गई ओटीसीएस की स्मार्ट और इग्नाइट बीसीए के लिए जो जो भी था वो, और फिर अभी अभी नहीं आएगी क्या 2-3 महीने बाद, या अभी अगले साल ही आएगी जैसे अगले साल, एनक्यूटी की आती है? अगले साल ही आएगी। मोस्टली एनक्यूटी तो एक बार ही होती है, बट देखो सर पैटर्न साल चेंज में होता 2 बार होती है टीसीएस एनक्यूटी तो, पर इग्नाइट जो है शायद बेसिकली एक बार ही ओपनिंग करता है अपना, साल में एक बार शायद। मुझे भी आइडिया नहीं, बट हाँ मैंने जितना स्टडी करा उस हिसाब से। सर एक, हाँ मुझे भी इतना वो पता नहीं है इसलिए पूछा था मैंने। है। हाँ देखो, देखो पैटर्न चेंज हो सकता है। देखो मार्च में जो अभी अचानक से इन लोगों ने हायरिंग निकाली फॉर 24, 25 एंड 26 बैच, दिस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड बिकॉज ये पैटर्न उनका नहीं था, बट उन्होंने करा। सो आई कांट से राइट, बट मोस्टली या एवरी ईयर एक बार होता है। अगर बीसीए स्टूडेंट को जॉब लेना है किसी टीसीएस में किसी भी रोल के लिए, लाइक डेटा एनालिसिस और एआईएमएल, तो हम्म। वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू प्रेफर करे या ऐसे वेबसाइट पे जाके अप्लाई करे सीधा किसी भी देखो रोल के लिए, उस पर्टिकुलर रोल के लिए, या वॉक इन ड्राइव इंटरव्यू? देखो सबसे पहले तो तुम अगर स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हें बेसिकली वो डेवलपमेंट स्किल पे ही जज करते हैं। बट बट अगर तुमने कभी इंटर्नशिप या समथिंग कुछ कर रखा है, तो एक प्लस पॉइंट है तुम्हारा कि अगर तुम ऑनलाइन भी वो करते हो अप्लाई, सो लाइक तुम्हारा एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, यू गेट अ वेटेज। बट ऑफलाइन अगर तुम बोल रहे हो, तो ऑफलाइन इज लाइक देख सकते हो, बट ऑफलाइन का कोई भरोसा नहीं है ना कि किस लोकेशन पे कहाँ पे रहेगा। और और ऑफलाइन में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन ये है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे तुम्हें रहकर ही वहां के लिए ऑफलाइन वॉक इन ड्राइव्स को ढूंढना पड़ेगा। सो ये एक थिंग है। यस सर, हाँ बट क्योंकि मैं 2-3 वीक से देख रहा हूँ वॉक इन ड्राइव ही ज्यादा मिल रहा है, ऑनलाइन भी है लेकिन ऑनलाइन वाले एप्लीकेशन डालने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे सर। हाँ, तो वॉक इन अगर है, तो अगर तुम जा सकते हो तो जाओ, ये तो बहुत बेस्ट है। बट बट ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन नहीं मिलता। हाँ, थोड़ी भीड़ ज़्यादा है ऑनलाइन में बिकॉज एप्लीकेशंस बहुत आते हैं, तुम्हें थोड़ा सा रिज्यूमे तुम्हारा थोड़ा स्ट्रांग होता है, और आजकल तो रिज्यूमे बहुत जल्दी वो लोग वो कर रिजेक्ट कर देते हैं। सो कुछ सर्टेन कीवर्ड्स वो भी देख रहे हैं जिसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। सर ये जैसे प्रोग्राम होते हैं अपने, हायर ट्रेन डिप्लॉय एमटीएच, मैथ्री जो प्रोग्राम था, अभी आपने शायद ग्रुप में भी आया था, तो सर इसमें मतलब इसका प्रोसेस क्या रहता है, थोड़ा सा वो बता देते क्या? क्या चीज़, कौन सा प्रोग्राम? सर मैथ्री MTHREE करके आया था ना अपने, मतलब एक प्रोग्राम हायर ट्रेन एंड डिप्लॉय वाला। सॉरी मैं देखा नहीं, टीसीएस मैथ्री। टीसीएस ना सर, टीसीएस मैथ्री नहीं, मैथ्री एक अलग कंपनी है जिसमें मतलब वो अपने को मतलब पहले हायर करता है, फिर ट्रेनिंग देता है, फिर 1-2 साल बाद अपने को किसी कंपनी में प्लेस करा देते हैं, फिर उसके बाद में जो है मतलब 2 साल ओके बाद ओके में ओके अपना पैकेज डिसाइड हो। ओके ओके, मीन्स वो कुछ पैसे भी चार्ज करते हैं? नहीं सर, पैसे चार्ज नहीं करते वो अपने को ट्रेन करते हैं, मतलब पहले उनका टेस्ट होता है एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद में कोडिंग, फिर उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उसको फिर आपको ट्रेनिंग देके और अपनी इंडियन कंपनी में प्लेस कर देते हैं, उनका बिजनेस ही यही है बेसिकली। अच्छा 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 अच्छा, करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ, तो कितने साल का क्या रहता है उसमें, कुछ मेरे को उतना आइडिया नहीं। नहीं सर, मतलब उसमें ऐसा रहता है, पहले वो आपको ट्रेन करते हैं, वो मतलब डिपेंड करता है 6 महीने 1 साल जितना भी होता है, फिर उसके बाद में जो भी अपनी इंडियन कंपनी है, जैसे मान लो आदित्य बिरला हो गई, LNT हो गई, या और भी अदर कंपनी हो गई, तो उसमें फिर वो अपने अपने को प्लेस कर देते हैं, फिर वहां पे आपको 1-2 साल में मतलब काम करना होता है,
तो उसके बाद में अगर आप काम अच्छा करते हो तो फिर आपको वो मतलब रख लेते हैं ऐसा। हाँ, तो मतलब ट्राई कर सकते हो, बट देखो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर सर उसमें कोई एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, खाली बैठने से तो बहुत बढ़िया है, बट वही बट द थिंग इज कोई बॉन्ड वगैरह का देख लेना। मे बी तुम वहां चले गए और उन लोगों ने कोई बॉन्ड या समथिंग साइन करा ली, ठीक है, फिर तुम्हें बीच में कहीं अचानक से एक नया रोल मिल गया और तुम अच्छी अपॉर्चुनिटी बीच में पा गए, सो तुम बाउंड मत करो खुद को बस। सी देखो भाई सर अगर प्रेशर के लिए जॉब देखना है, प्रेशर के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो कौन सी मतलब कैसे एप्लीकेशन या यानी ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह? हाँ, फ्रेशर्स की जॉब, देखो भाई फ्रेशर्स की जॉब मैं जब कॉलेज में था मेरे पास भी बहुत कम ऑप्शंस थे, बीइंग अ टीयर 3 और टीयर 4 कॉलेज में ऑप्शन बहुत कम थे, बट मैंने मोस्टली इंटर्नशाला पे एज अ इंटर्न ज्वाइन करा था, फिर वहीं से मैंने फुल टाइम करने की कोशिश करी थी। सो अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम फुल टाइम अभी फिलहाल कहाँ अप्लाई करते, कौन से पोर्टल्स हैं? सर मैं लिंक्डइन, इंटर्नशाला और फाउंडेन है ना वेबसाइट एप्लीकेशन, ओके ओके, लिंक्डइन। उस तीन पे। सो देखो लिंक्डइन पे मोस्टली जो तुम रोज देखोगे फ्रेशर के लिए नहीं है, पहली थिंग तो हाँ, ये। एक्सपीरियंस के लिए भी, हाँ, वो ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए ही है वो हाँ, ज्यादातर एक्सपीरियंस के लिंक्डइन लिए पे। है। और लिंक्डइन का जो इजी अप्लाई है जितना मैंने देखा है उसमें से चांसेस कम है। मे बी करियर चांसेस, पेज, यस सर। मे बी जो करियर पेज है ना उस पे अगर जाके अगर एक्सटर्नल लिंक दे रखी है उस पे जाके अगर अप्लाई करते हो तो फाइन, तो मे बी कुछ रिस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, बट इजी अप्लाई आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ ज्यादा आउटपुट है उसका। एंड उसके अलावा कहीं नौकरी या समथिंग क्या? इंडीड। हाँ सर, नौकरी भी है, इंडीड भी, मतलब जो जो एप्लीकेशन है ना जॉब के रिलेटेड, हम्म। उसमें सब अप्लाई करके रखा है लेकिन किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है सर। प्रोजेक्ट भी उस रिलेटेड बना के रखे, सब हो गए उसके रिलेटेड, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं। लाइक लिंक्डइन पे बनाए, नौकरी पे है, इंटर्नशाला, और फाउंडेन है ना मॉन्स्टर वाला, करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो उस पे भी सर अकाउंट है। तुम फुल टाइम रोल के लिए देखते होगे मे बी, एज इन मतलब एज अगर स्टार्ट ही करना है मे बी तुम इंटर्न वाले रोल्स के लिए भी देख सकते हो। सर बोथ के लिए अप्लाई किया है सर, पार्ट टाइम के लिए भी किसी किसी पे पार्ट टाइम के लिए अवेलेबल है, किसी को इंटर्नशिप के लिए, सब जिस जिस रोल के लिए है ना वहाँ पे सब अप्लाई किया, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है वहां से। ऑनलाइन ही बाकी के रोल के लिए बाकी के लोग प्लेस हो रहे हैं, लेकिन कुछ इशू आ रहा है, क्या पता सर, सब अप्लाई किया तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वहां से। तो तुमने मतलब तुम्हारी स्किल्स किस चीज पे तुमने काम करा है कॉलेज में या क्या सर क्या है? डेटा एनालिसिस सर, डेटा एनालिस्ट में पाइथन उसमें पाइथन सर पे तुम्हें प्रोजेक्ट तगड़ी कमांड है। पाइथन, ये सर पाइथन एसक्यूएल, और पाइथन एसक्यूएल से भी किया था सर, और नॉर्मल भी किया था एक्सेल पे। दो तीन प्रोजेक्ट भी बनाए हुए थे सर, हमें कोर्स भी हुआ था, उसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास आईबीएम का। देखो देखो, तुम मतलब आज तक कोई इंटरव्यू दिया है या कभी शॉर्टलिस्ट किसी में करा है, कोई ना कोई तो हुआ ही नहीं होगा सर, ना। नहीं सर, किसी भी नहीं, अप्लाई किया लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं आता है किसी के पास से। देखो फिर तुम्हें अब थोड़ा रिज्यूमे फिर सुधारो कि अगर क्यों, देखो अगर शॉर्टलिस्ट, सबसे पहला तो स्टेप है तुम्हारे शॉर्टलिस्ट करना, करेक्ट। सो थोड़ा रिज्यूमे में स्किल्स वगैरह डालो और देखो दो चार और स्किल्स अगर सीख सकते हो क्या, बिकॉज तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अपने रिज्यूमे ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फर्स्ट सर पेज फर्स्ट एक तो वही डाउट, है सर। हाँ हाँ। सर ये मैं पूछ रहा था जैसे हम बीसीए कर रहे हैं, अगर बीसीए से हमारा अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर हम निमसेट के लिए प्रिपेयर करें एमसीए के लिए एनआईटी से, या फिर आगे किसी कंपनी में मतलब अभी जो है कंपनी को टारगेट करें? देखो देखो मैं कुछ भी बोलूंगा ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, बट व्हाट आई विल से कि तुम एमसीए के टारगेट करो अगर तुम फाइनेंशियली या मतलब तुम्हारा पढ़ने का भी मन है, सबकी कंडीशन अलग होती है। सो बट आई वुड से इस एमसी एमसीए कर लोगे तो तुम्हारी जो डिग्री है ना वो मोर और लेस इक्विवेलेंट टू बीटेक ही कंसिडर करती है मोस्ट ऑफ द कंपनी। फॉर द बीसीए एमएनसीज भी कुछ सर्टेन रोल ही हायर कर रही हैं, और अगर स्टार्टअप्स में तो देखो भाई डिग्री डज नॉट मैटर, स्किल कंप्लीटली मैटर। तो अगर तुम्हें तुम्हारे खुद से पूछो भाई, अगर तुम्हें खुद तुम्हारे स्किल्स पे इतना कंफर्ट है कि नहीं नहीं मैं कुछ क्रैक कर ही लूंगा, देन आई वुड से कि तुम जॉब के लिए ढूंढो।
एल्स जो तुमने बोला NIT से MCA। सर BCA करने के बाद अगर MCA की जगह कोई कोर्स वगैरह किया उस फील्ड के रिलेटेड तो सुटेबल है, MCA करना ही कंपलसरी है? तो कंपलसरी कुछ नहीं होता भाई, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस समय करंट जॉब सिचुएशन ऐसी है, AI वगैरह काफी है, तो इस समय जो इंटरव्यूअर्स भी हैं वो काफी एडवांस लेवल पे पूछ रहे हैं, तो वो मोस्टली एक एरिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं। मोस्टली स्टार्टअप्स में तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत कुछ काफी फील्ड के क्वेश्चन होते हैं, तो वो ओवरऑल तुम्हारा बहुत कुछ जज करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने इतनी स्किल एक्वायर कर ली, तो तुम इसमें ही रहो। MCA कोई कंपलसरी नहीं है, बट हाँ MCA करने से अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बढ़ जाएंगी, और अच्छे कॉलेज से करने से तो काफी बढ़ जाएंगी, लाइक वो बोला NIT एंड ऑल। यस, उसके लिए सर निमसेट एग्जाम देना पड़ता है। निमसेट हाँ एग्जाम हाँ के बाद करेक्ट। में आपको NIT मिलता है, ऐसा। करेक्ट। MCA देखो ये चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा है वो MCA करके भी स्टार्टअप्स में हैं, फिर वो आगे स्विच करके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में भी हैं। तुम भी लिंक्डइन पे देख ही रहोगे, बट द थिंग इज उस समय क्या था और इस समय क्या था, चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई। यस सर। अगर तुम्हें कोई एंट्री लेवल जॉब मिल जाती है देन तुम इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। सर ये ऐसा पूछना था कि रेफर जो होता है वो कैसे वर्क करता है कंपनी में, थोड़ा उसका आइडिया हो जाता है तो थोड़ा मतलब अच्छा है। रेफरल एज इन स्टार्टअप्स में तो देखो, स्टार्टअप्स में तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि स्टार्टअप्स तो बहुत सी हैं, बट मैं MNC का बता सकता हूँ। MNC में मोस्टली रेफरल्स फ्रेशर रोल के लिए तो नहीं होते हैं, मोस्टली फॉर जितना मैंने देखा है TCS में भी, अगर HR कोई रोल हायर कर रहा होता है तो उसे पब्लिक डोमेन पे शेयर करता है, एंड तुम किसी को भी रेफर कर सकते हो, इंटरनल एम्प्लॉयज किसी को भी रेफर कर सकते हैं, ऐसा ही है। बट हाँ फ्रेशर के लिए थोड़ा सा रेफरल मिलना भी मुश्किल। हाँ सर सर ये भी वही रेफरल मिलता भी नहीं है फ्रेशर के लिए, ज्यादा जॉब भी ओपनिंग नहीं रहती फ्रेशर के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए जॉब ओपनिंग हो रही है अभी। हाँ भाई, और किसी का कोई डाउट है? हाँ, सर मैं अमरकांत बता दें सर। एक्चुअली सर मैं बीटेक कंप्लीट कर लिया हूँ, और मैं बहुत बार आपसे अपना रिज्यूमे भी शेयर किया हूँ, और रिज्यूमे मेरा बहुत ही स्ट्रांग है, मीन्स आपसे भी मैं दिखाया था, बट सर मेरे को कॉल सॉरी वगैरह ना सॉरी एक नौकरी पे। सेकंड, हाँ मैंने तो नहीं देखा कभी। सर, एक्चुअली मैं नंबर पे आपको और टेलीग्राम पे दोनों जगह ही शेयर किया था, और ओके, आपसे बोला था कि आप इसको इसको एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा। आप बोले थे तुम्हारा ओके। नंबर एक्चुअली मेरे पास हाँ मैंने हाँ, कभी नहीं। मैं प्रीमियम मेंबर हूँ आपका, इसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। एक सेकंड सॉरी। हाँ 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 हाँ। अच्छा हेलो, आई एम ऑडिबल तो मेरा मैं नंबर। टेलीग्राम हेलो, मीन्स जो भी है क्रैक ऑफ कैंपस अच्छा जो अच्छा, भी है, ओके ओके ओके, हाँ हाँ उनके थ्रू। हाँ, हाँ हाँ ठीक है ठीक उसके थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। है, ओके ओके, हाँ और बोलो। फिर तो मेरा स्ट्रांग है रिज्यूमे बहुत ही, बट फिर भी नो कॉल ऑन लिंक्डइन, और नौकरी के थ्रू कहीं से भी सर कॉल नहीं मिल पा रही है मुझे, मीन्स राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तुम्हारा टेक स्किल क्या है? मेरा जावा फुल स्टैक सर। जावा फुल स्टैक, कभी कुछ यस सर। इंडस्ट्री लेवल पे कुछ काम, मतलब इंटर्न या समथिंग कुछ करा है क्या? ये सर मैं हैदराबाद से नरेश आई टेक्नोलॉजी से मैं सर जावा फुल स्टैक का कोर्स किया हूँ, और यहाँ पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग भी किया हूँ। ओके, सी हाँ देखो इसके बाद में। हाँ हाँ। लिंक्डइन वगैरह पे तो देखो थोड़ा अर्ली, मतलब फ्रेशर रोल्स की ओपनिंग काफी हम्म कम है, हम्म तो हम्म। तुम्हें ऐसी जैसे इंडीड वगैरह देख लो, या मे बी एज अ इंटर्न भी हाँ कहीं हो तो उस पे भी अप्लाई करने का हाँ। ट्राई करो। देखो छोटी सर सी छोटी इंडीड, अगर, नौकरी और लिंक्डइन मैं तीन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट सर राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। अप्लाई में एप्लीकेशन बहुत ही करता हूँ, बट रिस्पॉन्स 0% है ही नहीं। अरे तो आज तक कोई इंटरव्यू शेड्यूल करा है या कभी दिया है? ऐसा तो कभी ना कभी शॉर्टलिस्ट हुआ ही होगा ना। हेलो।
हेलो। हेलो, आई थिंक तुम्हारी आवाज नहीं आ रही अमर खान। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, वरना फिर हम लोग क्वेश्चन ऐड करते हैं। ओके। सर Hi जैसे sir. Hello. हेलो। हाँ। ओके। Hello. Hi sir. Am I audible? यस यस। Sir, my name is Shajil Vishkarma. मैंने अभी रिसेंटली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फ्रॉम द बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड जब मैं फिफ्थ सेम में था तो मैं तब से ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया था मैंने वर्क करना। तो मेरे पास 1 ईयर का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है। मैंने 2 कंपनीज में वर्क किया है। फर्स्ट मेरी मेरे होम टाउन से थी और सेकंड मेरी रिमोट थी। तो दोनों ही स्टार्टअप थी। तो जिनमें मैंने वर्क किया है तो स्टार्टअप का कल्चर आप जानते हैं। जैसे जो स्मॉल कंपनीज रहती हैं तो उसमें मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। लाइक जो मेरा एमडी था वही मेरा मैनेजर भी था, सब कुछ वही था। एंड उसका जो काम करने का तरीका था, लाइक ना वो हमको मुझे रिसोर्सेज कोई अवेलेबल कराता था, मुझे ही मेरे ही रेंडर पे डिप्लॉय करने बोलता था। तो मतलब कि बहुत सारी परेशानियां थी। तो मैंने उसको उस कंपनी को छोड़ दिया है अभी 1 मंथ पहले। तो अभी मैं किसी एमएनसी के उसमें मतलब ट्राई कर रहा हूँ। तो उसके लिए कुछ गाइडेंस चाहिए थी कि मैं जैसे अभी ट्राई कर रहा हूँ तो मैंने लास्ट मंथ से रेज्यूमे वगैरह भी अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग किया है, बट वो सिलेक्शन में उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए मुझे क्या इश्यूज, मतलब किस टाइप के इशू है तो फिक्स कैसे करूँ मैं? अच्छा, तो तुम ऐसा रिसेंट पास आउट? यस सर, मैं अभी 2026 में पास आउट हुआ हूँ। लास्ट मंथ ही मेरा रिजल्ट आया है। और मेरा मतलब मैं जब फिफ्थ सेम में था तब से ही मैं वर्क स्टार्ट कर दिया था करना। तो 1 साल मेरे को हो चुका है काम करते करते। मैंने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे प्रोडक्शन में भी हैं अभी। कर्नाटका के एक क्लाइंट के लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट कंपनी में। पैनल का प्रोजेक्ट था, तो वो अभी प्रोडक्शन में जाने वाला है। उनका पूरा .com में कन्वर्ट करके भी दे दिया है मैंने। तो मुझे प्रॉब्लम ये जा रही है कि मेरे से काम आता है, सब आता है, बट मैं एक राइट कंपनी में जा नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे मैं फिक्स करूँ? देखो, एमएनसीज का तो ऐसा है, अगर तुम एमएनसीज को टारगेट कर रहे हो तो उनके भरोसे तो नहीं बैठ सकते। वो उनका कभी भी ओपनिंग मेन। आता है, उनका हाँ। रैंडम है। और अभी 26 बैच हो तो मोस्ट ऑफ द एमएनसीज में यू विल बी एलिजिबल। बट हम्म। फॉर द स्टार्टअप्स उसका तो एक ही तरीका अप्लाई ही कर सकते हैं। और जैसा तुम बोला कि कंपनी टू कंपनी वर्क कल्चर सही नहीं है, वो तो भाई कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मे बी नहीं, तुम मैं दोनों। जिस कंपनी में चला गया था वो कंपनी सही नहीं थी। कई हाँ स्टार्टअप्स रहते हैं जो अच्छे रहते हैं। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ। उसका साइज भी ऐसा था, लाइक जो एक वर्कफ्लो के अकॉर्डिंग काम नहीं होता था। मैं ही डेवलप करता था, टेस्ट भी मैं करता था। तो एज अ डेवलपर ये चीज नहीं होगी ना कि क्लाइंट से भी मैं बात करूं, डेवलप भी मैं करूं और उसको टेस्ट भी मैं करूं और देन उसके बाद फिक्स भी मैं ही करूं। तो ठीक है, डेवलपर का काम इतना होता है कि डेवलप करके दे दो और फिक्स करने का काम रहता है। बट ये सारी उसमें बहुत सारा मतलब कि वर्कलोड भी रहता था। तो वर्कलोड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो जितना मुझसे काम कराते मैं ही सीखता। बट जो और भी चीजें थी उसके कारण मुझे छोड़ना पड़ा वो कंपनी। हाँ देखो, मोस्टली ये सब जो बोल रहा है कस्टमर वाला काम, ये सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स में ज्यादा है। जितना मैंने हम्म। ऑब्जर्व किया है कि सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स मोस्टली उनका यूएसपी यही होता है कि वो कम पैसे में कस्टमर को डिलीवर करते हैं। सो दे पुट द वर्क प्रेशर। सो व्हाट यू कैन डू इज लाइक टारगेट द प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप। ऐसे नहीं कि बहुत बड़े भी, छोटे भी होते हैं, बहुत होते हैं। तुम उनको थोड़ा टारगेट कर सकते हो, मे भी अगर तुम थोड़ी ढंग की कंपनी ढूंढ रहे हो तो। और हम्म। एमएनसीज तो ही हैं, एमएनसीज तो उनका तो आता रहता है लाइक जैसे उससे। मैंने अभी एमएनसीज के लिए भी एक रेफरल डलवाया था। मेरे एक कलीग हैं, मतलब मेरे भैया ही लगते हैं वो। तो मैंने हम्म विप्रो में करवाया था।
बट उसमें उन्होंने मेरे को डेवलपर L4 का कर दिया था, रेफर कर दिया था। बट जैसे ही मैंने फॉर्म भरा तो मुझे शाम को ही उसका रिजेक्शन का मेल आ गया। देन मैंने उसमें रिसर्च किया तो उसमें 4 ईयर प्लस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। तो उससे भी हाँ थोड़ा मेरा मोरल डाउन हो गया था उसमें। फिर मैंने कहा कोई नहीं, देखता हूँ जो होगा। देखो, मैंने पहले बोला एमएनसीज तुम रेफरल डलवा दोगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो एंट्री लेवल जॉब्स के लिए रेफरल होते ही नहीं है। कोई भी हम्म। बोले कि रेफरल है एंट्री लेवल, एमएनसी में नहीं है किसी नहीं, बट भी। मेरा 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है। जस्ट मेरा पीएफ बस डिडक्ट नहीं हुआ है, बाकी मेरे पास सारा कुछ है उनसे। पे स्लिप नॉर्मल उनने मुझे दी है, एंड मेरे पास उनका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सारा कुछ है। तो मतलब मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे कोई अच्छी स्टार्टअप में जॉब मिलने के चांसेस अभी हैं। हाँ हाँ, तुम तो देखो रिसेंट पास आउट हो, तो तुम्हारी स्किल पे डिपेंड करता है। तुम्हें जावा वगैरह यस। अच्छी नॉलेज है, तुम अप्लाई हाँ, करो। मुझे मुझे है मर्न स्टैक का नॉलेज है, एंड मुझे जावा का भी नॉलेज है। डीएसए विद मैंने जावा के साथ डीएसए किया है। एंड मोस्टली हाँ, मेरे 300 क्वेश्चंस मैंने लीड कोड में भी सॉल्व किए हैं डीएसए के। एंड माई सिक्वल में मेरा स्टार्टिंग से मेरा मोटिव ये था कि मुझे डेटाबेस में जाना है। मुझे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही बनना है। बट जब मैंने सर्च किया तो कंपनीज वगैरह क्या करती हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर स्टार्टिंग में नहीं देती हैं किसी को भी। वो एक्सपीरियंस बंदों को ही देती हैं। तो फिर मुझे मर्न में काम स्टार्ट करना पड़ा, सीखा मैंने उसमें काम। देन मैंने उसमें काम किया। तो मैं मेरा स्टार्टिंग से ये, अभी भी मुझे डेटाबेस पे काम मिलेगा तो मैं 100% उसके लिए ही जाऊंगा, रादर देन मर्न में या जावा में या एआई में, किसी को भी छोड़ के, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा काम लगता है डेटाबेस में, इसलिए। बट वो मुझे मिल नहीं रहा है कहीं पर। देखो, सबसे पहले तो ये है कि और थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है। तो 1 ईयर ऑफ हम्म। एक्सपीरियंस पे थोड़ा जॉब मिलना थोड़ी मुश्किल है। यही एक तरीका है, अप्लाई करो, इंटरव्यूज दो, थोड़ा कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो हम्म। हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ नया जरूर होगा, ये तो 100% है। प्लस तुम हाँ। ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड। यस। बिकॉज बिकॉज हर इंटरव्यूअर कुछ ना कुछ अलग पूछेगा। हर हर का सबका रोल अलग होगा। तो मोस्टली जितना अप्लाई कर सकते हो उतना अप्लाई करो। रिज्यूमे जितना भी, कोई भी है एआई वेबसाइट समथिंग, अपना स्कोर देखते रहो, क्या कीवर्ड्स डाल सकते हैं कि जिससे शॉर्टलिस्ट हो जाए। एक तो ये ओके। चीज हो गई। और दूसरा, इंटरव्यूज जितने दे सकते हो कहीं भी, पेड अनपेड समथिंग, इंटरव्यूज दो। और ये चीज तो खैर किसी के हाथ में नहीं है कि कब जॉब मिलेगी या क्या होगा, अच्छी कंपनी हाँ, रहेगी कि वो नहीं। तो है कि किसी के हाथ में नहीं है वो चीज। वो बट खुद हाँ, की अगर मेहनत तुम पर थोड़ा डिपेंड अच्छी करता कंपनी है। टारगेट कर रहे हो, थोड़ा कंपनी के बारे हाँ। में एक बार अगर इंटरव्यू शेड्यूल होता है समथिंग, एक बार उसके बारे में देखो, क्या है, सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है तो कितना है, क्या रीच है, ये सब थोड़ा सा हम्म। तुम्हें खुद ही रिसर्च करना। बाकी हाँ। एमएनसीज तो समय के साथ तुम अप्लाई करोगे, आएंगी। 1 साल तक आती रहती हैं, नेक्स्ट ईयर तक भी आएंगी तुम्हारे लिए। हम्म। सो बाकी नहीं। थोड़ा एमएनसी के लिए तो अलग ही है उसका पैटर्न, कि वो थोड़ा कोडिंग वगैरह भी पूछते हैं, क्वांट एप्टीट्यूड सब कुछ पूछते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग उसके जैसे बाद। अभी मैंने कुछ कंपनीज का देखा है, टेक महिंद्रा, अमेरिकन चेज। तो इनमें वैकेंसीज हैं मेरे लायक, बट उसमें क्या हो रहा है कि कुछ रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनके एम्प्लॉयज के थ्रू वो पोस्टिंग निकाल रहे हैं। लिंक्डइन में मैंने चेक किया, तो मैं उनके एम्प्लॉयज को कई बार मैंने मेल किया है, बट उनका रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आता बिकॉज वो, आई थिंक वो इंटरनल हायरिंग है। तो जो उनकी इंटरनल हायरिंग से वो पहले से ही बंदे सिलेक्ट करके रखे हैं, वो केवल पोस्टिंग निकाल रहे हैं। तो इसके कारण आजकल आ नहीं रहा है, एंड राइट इंसान को जॉब इस मिल नहीं पा रही है, ये जो इंटरनल रेफरल जो हो रहे हैं उसके कारण। देखो, हाँ एमएनसीज का तो देखो भाई, वो मोस्टली मैं जितना भी ऑब्जर्व किया हूँ, कभी भी रेफरल फ्रेशर रोल पे तो लेती ही नहीं। हाँ। बट ये है, तुम अगर तुम्हें एमएनसीज नहीं मिल पा रही या फॉर द टाइम किसी कंपनी में ओपनिंग तुम्हें नहीं दिख रही, स्टार्टअप, क्योंकि तुम एक बार इंडस्ट्रियल लेवल एक्सपीरियंस हो गए, तुम एमएनसी में ऑलरेडी आ सकते हो बहुत इजीली। या मे बी तुम नहीं, मुझे मुझे है एक्सपीरियंस मेरा, मेरा नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने एक काम साल किया है। सीखिए, 1 साल एक्सपीरियंस तो और एमएनसी नहीं देगा। हाँ, वो तो टू बी मेन बात वेरी वही फ्रैंक, है। 3 साल ईयर मिनिमम फॉर द एमएनसी अगर टारगेट करो तो मिनिमम 3 से 4 साल एक्सपीरियंस होना ही चाहिए।
और एज अ फ्रेशर एमएनसी में जाना मुश्किल है। मुश्किल है, करेक्ट। और लाइक सबसे जैसे लेके जाओगे तो टीसीएस का पैकेज एनक्यूटी उतना होता रहेगा। है। और नहीं, मुझे पैकेज की प्रॉब्लम नहीं, मुझे पेमेंट मेरे पैकेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 5 LPA भी मिलेगा, 4 LPA भी मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट उसमें मुझे मतलब एक बार उसमें एंट्री लेना है। पैकेज तो मैं अपने काबिलियत के अकॉर्डिंग मैं बढ़ा लूंगा पैकेज। बट एक बार उसमें एंट्री मिल जाए बस, वो उसके लिए मैं पूछ रहा था कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ देखो भाई, फ्रेशर्स के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। जब भी हम्म ओपनिंग आए, यूट्यूब वगैरह जहाँ भी तुम्हें बढ़िया सोर्स जो भी लगता हो इन्फॉर्मेशन का, वहाँ पे तुम थोड़ा एक्टिव रहो। जो भी रोल हम्म। आए एमएनसी में, कुछ भी आए, करियर पेज पे जाओ, करियर पेज में भी तुम विजिट कर सकते हो। सबसे ज्यादा रोल्स वहीं तुम्हें दिख जाएंगे, बड़ी हाँ, कंपनीज में मैं जाओ। करियर पेज से भी करता हूँ अप्लाई। हाँ हाँ करेक्ट, वही सब हैं। और बाकी छोटी मोटी कंपनीज भी हैं, उनका भी करियर पेज देखा करो, लिंक्डइन वगैरह देखा करो या समथिंग। उनके करियर पेज पे जितनी जॉब्स होती हैं उसमें मिलना थोड़ा ज़्यादा ईजी है एज हम्म। कम्पेयर टू किसी थर्ड पार्टी पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। ओके। तो यही है तरीके। ओके। ओके। सो ओके। थैंक यू फॉर दैट। हेलो। या हाँ, या थैंक यू थैंक्स। फॉर दैट सर। एंड या मुझे थैंक्स। एक क्वेश्चन और था, लाइक मेरा जो अभी कॉन्वर्सेशन था आपके साथ, तो उसमें आपको लाइक क्या लगा कि कुछ मिस्टेक्स वगैरह हैं मेरे में, तो वो मुझे क्या ओवरकम कैसे करूं मैं? देखो मिस्टेक इन, देखो मतलब टेक्निकल क्या फील्ड गलतियां? में, टेक्निकल फील्ड में देखो, जिस दो चीजों पे तुम्हें जज किया जाएगा, एक तो है टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, हम ओके। तो ऐसे वर्बल कम्युनिकेशन करें तो हम टेक्निकल कुछ कर वर्बल नहीं। में तो नहीं कर सकते, हाँ। ठीक है, ठीक है। तो वो तो टेक्निकल इंटरव्यूज में ही जज करता है आदमी। ठीक है। हाँ। सेकेंड ओके। थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक, हाउ हाउ फ्लुएंट यू आर इन कम्युनिकेशन, मतलब तुम अपनी बात को रख या। भी पाओगे कि नहीं जो तुम्हें आता है। बस यही दो चीजें हैं। यस। तो वो तो बढ़िया है, देखो वर्बल तो भाई बढ़िया है, लेकिन वही टेक्निकल नॉलेज अब तो टेक्निकल इंटरव्यूज में ही पता चलता हम्म। है। वही। ओके। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू। टाइम भी ज्यादा हो गया। ओके, थैंक्स।